is different. यहाँ पे you need two things to understand. Oh. Hey guys, welcome back to our channel. आज की वीडियो में ना आइल्स के बारे में बात करेंगे एंड ये कोई ड्रीमी स्टोरी नहीं है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. आज हम बात करेंगे हमारे आइल्स की जर्नी की एंड हाउ आई कम फ्रॉम अ सिक्स स्कूल. I scored in my 50s in English back in 10th and 12th standard, and 14 years later how I was able to score a CLB 10 in IELTS. So let's get started. So this is my 10th standard report card and this one is my 12th. I know it means nothing today and English सीखे कोई नहीं आता पहले से and I was very weak when it comes to English. हम दोनों 6 स्कूल्स में पढ़े हैं and by the way it was the same school but वो कहानी किसी और दिन बताएंगे. But like everyone else in India, हम लोग भी इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोलते थे स्कूल में. And as you can see from my report card, I was not very good with English. Spelling मेरे बहुत खराब थे, आज भी खराब है. I was shit scared of the stage and by chance अगर मैं stage पे कभी पहुंच भी गया तो I would freeze. Guys, ये story सिर्फ नवजोत की नहीं है. I am sure a lot of people can connect to this. And if you do, तो if नवजोत can do it, you can do. फिर बारी आई कॉलेज की जहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग करी थी अगेन फ्रॉम अ सिक कॉलेज जहाँ पे कई बार पंजाबी में भी काम चल रहा था. इंग्लिश तो दूर की बात है. इट गॉट वर्स फॉर मी बिकॉज मेरे को देना था कैट एंड कैट अगर आप लोगों ने दिया है तो उसमें 3 सेक्शंस होते हैं. एक होता है लॉजिकल रीजनिंग जहाँ पे मेरा 96 परसेंटाइल आया विच वॉज अमेजिंग. मैथ्स मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्गेस्ट सूट था तो मेरा वहाँ पे 99.5 परसेंटाइल आया. एंड इंग्लिश में आई फेल्ड अगेन. आई गॉट अ 53 परसेंटाइल जिस वजह से मेरा IIM रह गया. एंड गाइज इसमें हमारी गलती नहीं है. इंग्लिश इज जस्ट नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज बट इंग्लिश के बिना काम नहीं चलता ना MBA में ना कनाडा में. फास्ट फॉरवर्ड 10 years मेरी इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव होनी शुरू हो गई बिकॉज आई वॉज नाउ वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ पे आई हैड टू टॉक विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. नाउ आई वॉज ऑलवेज गुड विद नंबर्स एंड मेरा जॉब भी वही था तो इसलिए मेरे को थोड़ी रिकॉग्निशन मिली. मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा एंड इंग्लिश स्टार्टेड टू इंप्रूव स्लोली. बट फिर आया कनाडा इमिग्रेशन का टाइम. मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था एंड नवजोत वाज ऑलरेडी 31 तो CLB 9 के साथ भी हमारे सिर्फ पॉइंट्स बन रहे थे 455. वी आर टेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन आवर लाइफ एंड फिर मेरी इंग्लिश बीच में आ गई. जिस बंदे के कभी 50 से ऊपर आए नहीं, आई वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कोरिंग नॉट जस्ट CLB 9 but CLB 10 and I had no other option. We talked about how to prepare for IELTS in our 5th video on the channel, but preparation से ज़्यादा it's all about mindset. उस टाइम पे we did not have a lot of time. हमारा business expand कर रहा था, but हमें ये समझ में आ गया था कि preparation के बिना काम बनने वाला नहीं है. एंड फिर सिमरन ने कहा कि हम आइल्स का एग्जाम बुक कर लेते हैं 1 महीने बाद का एंड दैट्स व्हाट वी डिड. हमारे पास अब 1 महीना था. मेरी वर्ल्ड क्लास इंग्लिश जिसमें मैं हमेशा फेल होता था एंड वी हैड एन एंटायर माउंटेन टू क्लाइंब. बट हमने ठान लिया था कि ये करना है तो करना है. मिनिमम 2 घंटे हम हर दिन निकालेंगे फॉर आइल्स प्रिपरेशन. हम सुबह जल्दी उठने लगे ताकि ऑफिस जाने से 2 घंटे पहले एटलीस्ट हम आइल्स की प्रिपरेशन कर ले एंड वी हैड अ प्लान. अब हमें पता था कि राइटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन एंड उसके अंदर हमारा बैंड 7 आ जाए वही बहुत है. So we picked that section which we thought is the easiest and that's speaking. And speaking में CLB 10 लाना थोड़ा सा relatively easy है. And we did 2 things for that. Number 1, we started speaking in English with each other. That's really important. Speaking test में the main thing is the flow and वो practice से ही आता है. If you have a partner, start speaking with him or her in English. And अगर आप single हो तो start speaking in English with your parents, siblings or friends. But you need to practice and more than that, you need feedback कि जो आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो कि नहीं. Which brings us to the second point, which is we use the app Cambly. Guys, yes, this is a sponsored video, but Cambly के बारे में हमने अपनी 5th वीडियो जो इस चैनल पे थी उस पर भी बात करी थी. तब हमारे 76 सब्सक्राइबर्स थे एंड हमारी ऑब्वियसली उस टाइम पे स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं थी. We get a lot of emails every day about sponsorships, but we like to partner with products जो हमने use किए हैं personally and we know they are good. And when Cambly reached out, we said yes because we have used it and we know it's helpful. Cambly is the only app in India that provides one-on-one private English classes with tutors from USA, Canada, UK. Let's see how it works. So when you open the Cambly app, you will see that there are different courses that you can choose from like professional development, business English, या IELTS. You can either do that or you can directly talk to a tutor and you can actually check their profiles before talking to them. So let's make a call to a Cambly tutor. Hi, how are you? Good, and you?
I'm good too. Thank you so much for taking this call. I have joined to learn, about IELTS. I'm giving IELTS pretty soon. I think I'm okay with speaking, but just, that the flow sometimes I miss on. So that's where I would like to. Fluency? Yes. Yes, the correct word is fluency. I used Cambly for 1 month with 4 classes and I learned a lot of things from there. Let me give you an example. So I was talking to John who was from the UK and I used the sentence, "Hi, I am Navjot and today I'd like to discuss tips and tricks about how to improve my speaking score in IELTS." सही लग रहा है sentence, but ये काफी गलत है. Because John told me that the word tricks actually means a cunning act to deceive someone. And it's not a good word to use in your IELTS speaking exam. And I was like, shit. शुरू से यूज कर रहा हूँ बचपन से ये वाला वर्ड एंड नो वन टोल्ड अस अबाउट दिस एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट फीडबैक ऑन योर स्पीकिंग बिकॉज स्मॉल थिंग्स लाइक दिस कैन बी द डिफरेंस बिटवीन यू स्कोरिंग अ 7 or a 7.5 in speaking. Anyways guys, even though we are being paid to talk about Cambly, but ये advice हम आपको तब भी देते अगर आप हमें किसी coffee shop में मिले होते. Because Cambly helped us with our IELTS, and the good thing is they have offered a 25% discount for our family. So use the code 25potato to get 25% off when you buy a plan, and I'm sure it will be worth it. इसके अलावा वी ऑल्सो वॉच्ड अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज जहाँ पे हमें बहुत सारे टिप्स मिले ऑन हाउ टू गो थ्रू योर स्पीकिंग कंटेंट. सो वो वाली वीडियोज जो हैं वो हम नीचे डाल देंगे इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू वॉच देम, इट विल रियली हेल्प यू. अब नेक्स्ट आते हैं लिसनिंग एंड रीडिंग पे. एंड यू नो व्हाट, दिस इज सिंपल. एग्जाम सिंपल नहीं है लेकिन CLB 10 लाने का फॉर्मूला सिंपल है, एंड दैट इज प्रैक्टिस. जो हमारे पास जो 30 डेज थे उसके अंदर वी मेड श्योर दैट वी आर डूइंग 1 रीडिंग एंड 1 लिसनिंग एवरी सिंगल डे. जब हमने पहला मॉक टेस्ट लिसनिंग का अटेम्प्ट करा था उसके अंदर आई स्कोर्ड अ 6 एंड रीडिंग में कॉम्प्रिहेंशन आता है और मेरे को अपने स्कूल की याद आ गई. तो मोर देन द एग्जाम आई वाज टेरिफाइड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड आई हैड नाइटमेयर्स ऑफ स्कोरिंग 50s अगेन. बट वी अंडरस्टूड कि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला है. जैसे जैसे हम आगे टेस्ट करते गए वैसे वैसे हमारा स्कोर बढ़ता गया एंड कॉन्फिडेंस भी. अब हमें बहुत लोग पूछते हैं कि हमारा लिसनिंग में स्कोर नहीं आ रहा, एंड देन वी आस्क के आपने कितने टेस्ट करे हैं, कितनी प्रैक्टिस करी है. तो दे से कि अराउंड 10 टेस्ट करे हैं सिर्फ. एंड दैट्स जस्ट नॉट इनफ. Oh shit. सॉरी गाइज, इतनी तेज इनफ बोला कि फोन नीचे गिर गया हमारा. बट कहने का मतलब ये है कि अगर आप 30 लिसनिंग और 30 रीडिंग से कम प्रैक्टिस कर रहे हो, इट्स जस्ट नॉट इनफ. एंड आई एम नॉट सरप्राइज कि आइल्स में नंबर कम आ रहे हैं लिसनिंग और रीडिंग में. एंड कॉम्प्रीहेंशन स्पेशली इज वेरी सिंपल बिकॉज आंसर सारे कॉम्प्रीहेंशन जो पैसेज है उसके अंदर ही लिखे हैं. हमें बस उसको समझना है जो क्वेश्चन है एंड वो टेपने हैं. And it can be done if you do enough practice. But listening is different. यहाँ पे you need 2 things to understand. Oh. अब listening is a little different and you need 2 things for that. One is concentration and the other is understanding the accent. अब जब हम IELTS एग्जाम देने जाते हैं तो द फर्स्ट सेक्शन इज योर लिसनिंग एग्जाम, एंड आप टेस्ट मोड में आ रहे होते तो थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने के लिए, बट दैट्स द टाइम दैट यू डू नॉट हैव. अब जब हम टेस्ट देने गए थे तो आवर टेस्ट स्टार्टेड एट 1 PM इन द आफ्टरनून. उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन भी लो होती है, भूख भी लग रही होती है, एनर्जी भी कम होती है. सो वी मेड श्योर कि जब हम प्रैक्टिस करें तो हम लंच टाइम में प्रैक्टिस करें जब कॉन्सेंट्रेशन एंड एनर्जी थोड़ी लो होती है. इट्स लाइक पायलट ट्रेनिंग. जब पायलट प्लेन उड़ाने जाता है उससे पहले ही हैज टू स्पेंड आवर्स ऑफ ट्रेनिंग इन अ सिमुलेटर. अब ये इतना एक्सट्रीम नहीं है आइल्स वाला केस, बट इट्स सिमिलर बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस एंड क्रिएट दैट एनवायरनमेंट इन योर होम व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग, ताकि जब आप आइल्स में जाओ तो आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना बेस्ट दे पाओ. अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग द एक्सेंट. Watch Australian, British and US shows on Netflix. Entertainment का entertainment and training की training. Do watch our video with Ashish where he talks about how he cleared IELTS in his 4th attempt, and he also shares the tips for listening exam that will help you. अब आता है writing and that's a beast. We have seen so many people struggle with this. We have even seen people who get 9s in their listening and reading, even speaking, and they struggle to get a 7 in writing and get stuck at 6.5. ऊपर से नवजोत की हैंडराइटिंग बाय गॉड इतनी खराब, एंड ये डॉक्टर भी नहीं है, तो इसकी तैयारी हमें थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ी, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस.
हमारी नहीं, E2 IELTS की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वी कांट स्ट्रेस दिस इनफ कि इस चैनल पे जितनी वीडियोस हैं यू शुड वॉच देम ऑल। हम भी while going to ऑफिस, वॉशरूम में, जिम में, हर जगह सिर्फ ये वीडियोस देखते थे। इट्स फ्री एंड इट टेल्स यू बेसिकली द थ्योरी ऑफ हाउ टू राइट अ गुड लेटर और एन एसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर्मल लेटर में कैसे स्टार्ट होनी चाहिए, क्या टोन होनी चाहिए, कैसे एंड होना चाहिए, वर्सेस एन इनफॉर्मल लेटर में क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। दिस हैज नथिंग टू डू विद योर ग्रामर और योर इंग्लिश। दिस टेल्स यू हाउ टू राइट अ गुड एसे और योर लेटर डिपेंडिंग ऑन कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है। नंबर 2 इज प्रैक्टिस। हम हर रोज एटलीस्ट 1 ऐसे या 1 लेटर लिखते थे एंड एक दूसरे से चेक कराते थे। अगर आपकी राइटिंग या स्पेलिंग्स मेरी तरह खराब है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक अ पेन एंड राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। एंड अगर आपकी बहुत ज्यादा खराब है जो राइटिंग है, then even consider giving a computer based test. अब आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, you cannot improve in writing जब तक आपको feedback नहीं मिलता। Now we were a little lucky. Our school English teacher actually helped us giving feedback to us. She used to help us with sentence formation, grammatical errors and complex sentences कैसे बनाने हैं। The problem is स्कूल में हमें सिखाते हैं कि हमें सिंपल सेंटेंसेस लिखने चाहिए, छोटे सेंटेंसेस लिखने चाहिए, बट IELTS में इस चीज के नंबर कटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू कैनेडा, I will have to score well in IELTS. अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस अलग अलग तो बहुत ही सही हैं, दे आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट IELTS में इसके कम नंबर मिलते हैं। इंस्टेड वी नीड टू राइट I will have to score well in IELTS if I want to make it to Canada. This is a complex sentence and this is what an IELTS examiner is looking for. अब a lot of people say us कि आपका राइटिंग में CLB 10 आया तो आप प्लीज हमारी हेल्प कर दो हमारा ऐसे चेक करने के लिए। But to be honest, and now that you know our background, getting CLB 10 was a lot of hard work and it doesn't come naturally to us. So it's just not right for us to be telling people how to write. अब मेरा CLB 10 आया था और मेरे को एक चीज पता है कि सिर्फ एक रीजन था उसका आने का, एंड दैट वाज फीडबैक। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट एंड कंसिस्टेंटली स्कोरिंग 6.5 in your writing, that's what is missing. And we want to help. So soon we will be coming out with a collaboration with people who know what they're talking about. They are certified English trainers, they are native speakers and have been doing this for 7 years. Simran has been working really hard on this collaboration and hopefully very soon we'll get them on the channel and they will be able to help you get a 7 or a 7.5 in writing. So stay tuned and do subscribe to the channel so that you don't miss out on that. So this was our journey from scoring 50s in school to CLB 10 in IELTS, and this was all hard work. If we can do it, you can too. हमने कौन सी बुक्स यूज करी, कौन से मॉक टेस्ट करे, कैम्बली ऐप का लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। डू चेक दैट आउट। आई होप दिस रिसोर्सेज हेल्प यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।